A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So starting with the analysis video for the day. Firstly, we see Article 35A denied many in Jammu and Kashmir their rights. This is what our Chief Justice of India has to say कि Article 35A की वजह से बहुत सारे लोग जो जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे, they were denied their rights. So Chief Justice he asked the center if it adhered to the principle of federalism जब Article 370 को abrogate किया गया. This is first question. And he says that Article 3 makes it mandatory to consult the state legislature before altering the status of a state. तो प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म इसी चीज की बात की जा रही है, यही क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग रेज किया गया है बिकॉज आर्टिकल 3 मेक्स इट मैंडेटरी कि अगर आपको किसी भी स्टेट का स्टेटस चेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ फ्रॉम बीइंग अ स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी, तो आपने क्या स्टेट लेजिस्लेचर से कंसल्ट किया कि नहीं. तो यहाँ पे वर्ड कंसल्टेशन लिखा हुआ है बट कंसल्ट करना ही मैंडेटरी है. उनका क्या व्यू होगा या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्या वो रिकमेंड करेंगे, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट क्या आपने कंसल्ट किया, दैट इज द मेन क्वेश्चन. Then Article 35A gave special rights and privileges to permanent residents and virtually took away the rights for non-residents. मतलब Article 35A majorly जो वो बात करता है that is कि special rights and privileges देने की बात करता है to only permanent residents of Jammu and Kashmir. तो in a way indirectly हम बोल सकते हैं कि virtually जो लोग permanent residents नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर की, उनको वो rights वो privileges नहीं मिली. तो there came this gap in between. So these are some of the questions that have been raised by the CGI and regarding the process of abrogation of Article 370 and Article 35A की वजह से how the rights were denied to the non-permanent residents of Jammu and Kashmir. So he said that the abrogation, it was facilitated by first dissolving the Jammu and Kashmir state legislature and then proclaiming president's rule under Article 356 on the ground of breakdown of constitutional machinery in the state. तो इस manner में basically Article 370 को abrogate किया गया. Firstly, जो state legislature था उसको dissolve किया गया and then president's rule was imposed. So he pointed to the provision to Article 3, which made it mandatory for the president to consult the state legislature before altering the status of a state. So proclamation of the president's rule tha, that was there in December 2018, it had done away with the applicability of this provision because again, just state legislatures are that had been dissolved. But the parliament assumed the role of the Jammu and Kashmir state legislature. This is what Solicitor General has informed the Supreme Court. So are you saying that the parliament would then give its views to itself about the alteration of the Jammu and Kashmir from a state to union territory and also enact the law for reorganization of the state? So a question raised kiya gaya, would that really be consistent with the federal structure or not? So in a way ये concern raise किया गया है by the CGI कि अगर आपने पहले स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो गया, फिर आपने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया, उसके बाद ऑब्वियसली पार्लियामेंट कम्स टू द फोरफ्रंट. तो सॉलिसिटर जनरल का कहना ये है कि सिंस प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया तो अब प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेचर को कैसे कंसल्ट करे. स्टेट लेजिस्लेचर इन अ वे पार्लियामेंट ही स्टेट लेजिस्लेचर हो गया इस केस में. तो सीजीआई का कहना है कि क्या पार्लियामेंट ने अपने आप से खुद से कंसल्ट किया कि अगेन स्टेटस ऑल्टरेशन किया जाना चाहिए कि नहीं. सो क्या नहीं लगता कि इस चीज की वजह से जो फेडरल स्ट्रक्चर है दैट हैज बीन टिंकर्ड विद या दैट हैज बीन वायलेटेड. So then Mr. Mehta said ki it is a state, Jammu and Kashmir is a state with a legislature, everything, only the police powers there with the presidents. So it was a very detailed reorganization. So permanent residents of the erstwhile state included people who were hereditary state subjects as in 1927 when Jammu and Kashmir was a princely state. So उस टाइम के जो लोग थे they are the permanent residents of the state. So बोला कि मतलब बहुत
से टेक्निकली चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया था. Then Aditya L1 mission, this we discussed about, it would be launched to study the sun. So this is going to be our next focus area. And Lagrange L1 point में इसको launch किया जाएगा. So L1 point में इसको launch करने का main advantage है, या position करने का main advantage would be कि हम continuously sun को view कर सकते हैं from that point without any eclipse or any obstacle or hindrance in between. So preventive custody क्या होती है ये आप सर्च करोगे. सब आप देख रहे हो यहाँ पे रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कि मुस्लिम बॉय वाज स्लैप्ड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे एफआईआर फाइल की गई है अगेंस्ट द एएलटी न्यूज को फाउंडर फॉर डिस्क्लोजिंग द बॉयज आइडेंटिटी इन दिस स्लैप केस. सो अर्लियर अगेन ऐसे एक्शंस देखने को नहीं मिले हैं, स्पेसिफिकली जब किसी इंसान की आइडेंटिटी ऐसे डिस्क्लोज की जाती है. सो we can basically say कि we are seeing some changes happening. So water dispute between Tamil Nadu and Karnataka regarding the sharing of Kaveri river water. So let Karnataka release 5,000 cusecs of Kaveri water to Tamil Nadu. So Karnataka upper riparian state है तो कहीं ना कहीं वो advantage misuse किया जाता है by Karnataka. So Kaveri Water Management Authority ने decide किया है. And और क्या आगे recommendations होगी of the Kaveri Water Regulation Committee that would be decided today. So तमिलनाडु की जो डिमांड है that is 24,000 cusecs per day for next 15 days. ये situation थोड़ी और खराब हो गया because of weaker monsoon this time. Then again, one more important question about the railway safety जो अभी देखा गया recently मदुराई कोच में fire incident देखा गया. So again यहाँ पे obviously authorities how can they be so relaxed and so lackadaisical जब हम बात करते हैं कि the passengers they were carrying the inflammable objects and things with them while traveling, so which is obviously highly prohibited, that is not allowed at any cost. And they were making tea inside the train using a cylinder which blasted off, and that ultimately led to this fire incident. So internal dimension क्या है on the road to 2024 again यहाँ पे 2024 की बात करें तो talking about the general elections which would be there. So as India rejoices over the success of the moon mission and it is set to host the G20 summit also, so it might be useful for its leaders to heed lessons from Chandrayaan missions. That is, instead of focusing on achieving success, we basically we're referring to ISRO focused on eliminating the failures. So very nice statement. You can use it in your answers as well. Ki instead of focusing on how you will be achieving the success, you need to focus on eliminating the failures. So ultimately you will be successful. So this is a pre-election year and it's more important for the policymakers not to sweep uncomfortable aspects under the carpet or remain content with the apparent surface calm that can oftentimes be illusionary also. So several disparate developments, not all of them are healthy, they are currently taking place across the Indian landscape. So several, they have the potential to cause even serious trouble now and in the future also. So one of them is definitely inflation. And it's essential and important that these are properly assessed lest any of the situations go out of control. So let's understand Manipur is one thing. Ethnic violence jo dekhi gayi, still we are seeing ki things are not coming back to normal. Because कहीं ना कहीं अभी भी जो
majority community है, meaty community है, there's still, blockade is going on around the areas to access the tribal regions. So Manipur in India's northeast, and which abuts Manipur, is a test case. So यहाँ पे कहीं ना कहीं, since it is bordering Myanmar, तो जो ड्रग ट्रैफिकिंग वाला इशू है, अगेन इंटरनल सिक्योरिटी वाला इशू है, वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है. तो ये सिचुएशन का बेसिकली मिसयूज एडवांटेज उठाया जा सकता है बाय द ड्रग ट्रैफिकर्स एज वेल. सो सिक्योरिटी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर सीइंग कि स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग मेजर्स कि इसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई है, जो एक्सेस है, वो उनको पहुंचाया जाए टू द ट्राइबल कम्युनिटी. एंड डिफरेंट मीन्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उनको बाय एयर उनको ड्रॉप की जाएंगी द इसेंशियल्स. सो मेन चीज जो है, वी नीड टू एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. एंड अभी ऑब्वियसली जो भी मेजर्स ले जाएंगे, दे आर टेम्पररी इन नेचर. सो लास्टिंग सॉल्यूशंस, दैट नीड्स टू बी आवर फोकस. So this is one thing. Then other threats, and definitely there's a need for vigil. So what applies to the militant contestations in the northeast, it may not apply to mutandis to the situation that is it is existing in the hinterland, but vigilance should be the watchword. So we need to have vigilance around the situation in the hinterland. So nature and content of the threats hai, that is posed, that may be different, but they often tend to be more intense. So जब बात करते हो आप Maoist की, whom may across India they appear to have written off as a threat in the absence of spectacular attacks such as the Dantewada attack जो देखा 2010 में, छत्तीसगढ़ में 2013 में, then Sukma in 2017 and 21. We're seeing reduction in their areas of operations and a lull in the activity since 2007. They're still a threat. तो since अगर जो मतलब मैसिव ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द मायोस्ट, बट अगेन वी कैन नॉट देन टेक देम फॉर ग्रांटेड कि द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल. अगेन यहाँ पे भी विजिलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मायोज्म इज अनदर internal security threat that you can talk about. So geopolitics often influences the course of the right-wing terror, and given the state of the world today, India needs to be on its guard. So चाहे आप Islamic State की भी बात करें, Kerala में we have seen many instances which was believed to be in decline since 2019. It is showing signs of major resurgence again. So this is another threat. Again, इसको भी we need to control it within time. Otherwise, again, इसके जो again links इंडिया में हमने देखने को मिले, how people they were mind washed, and specifically केरला में काफी सारे ऐसे incidents हमें देखने को मिले. Then polarization की बात करें तो further unfortunate trend that is manifested itself of late and which could escalate in pre-election year is the re-emergence of communal violence and communal riots in the country. And अभी recently of late हमने देखा हरियाणा के नूह district में how again that was communal violence, and can't call it to be riots but communal violence major level पे it was there, and उसके repercussions हमें देखने को मिल रहे हैं in terms of जो migrant labor force थी, they have again went back to their villages, to their native towns. So actually अब उन लोगों की importance realize हो रही है. So this is attributed to increasing polarization along the religious lines. So again जब जो प्योर रिलीजियस आइडियाज हैं उनको इस तरीके से पुटअप किया जाता है कि इट लीड्स टू द पोलराइजेशन, so it results into communal violence. So several pockets of communal tension they all of a sudden emerged across the country, and specifically जरूर देखा जाता है कि इलेक्शन ईयर के टाइम में ये चीजें थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं. So Haryana and Maharashtra में we see of late communal violence took place. So forensic analysis की अगर हम बात करें specifically हरियाणा से related and जो पहले incidents हुए महाराष्ट्र में,
they've revealed certain very disturbing aspects, so that quite a few instances of riots were deliberate. मतलब according to the forensic analysis, ये बोला जा रहा है कि कुछ जो incidents हुए during this whole scenario, कुछ जो attempts थे, they were deliberate in nature. मतलब उनको deliberately ऐसा किया गया. So communal violence has also been spreading to areas that are perceived to be relatively free of such problems. So so-called peaceful areas हैं वहाँ पे भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, and hence all this will need detailed attention. So India has to be careful to ensure that polarization along the communal lines does not lead to a situation where India's current image as a bastion of democratic virtues is sullied. So again, ये global level पे India की image को impact करेगा. So India's well-earned reputation for holding the peaceful elections, notwithstanding the odds, calls for far greater vigilance. So again, peace is something which cannot be taken for granted. अगर attacks नहीं हो रहे हैं, आप माओइज्म की बात करो, नक्सलाइट attacks की frequency कम हो गई है, उसकी intensity भी कम हो गई है, तो we cannot take it for granted. Then Neeraj Chopra is leading a javelin revolution for India. Recently, we saw he's the new world champion and scripted another glorious chapter by becoming the first ever Indian to secure a gold in the World Athletics Championships, which was held in Budapest. So his throw was 88.14 meters, which won him the top position. And again, apart from Neeraj Chopra also, how is, this thing has impacted even the juniors also. So there were basically 3 Indians in the final. So that's a big thing. So India and Greece relationship, important topic from international relations. They're finding new ways to revive the age-old relationship. So of late हमने देखा कि the ties have been raised to the strategic level. And speaking after the bilateral meeting with the Greece Prime Minister, Prime Minister Narendra Modi, he highlighted that India-Greece bilateral relationship, it have neither been diminished nor has the warmth decreased, despite no Indian Prime Minister having visited Greece since 1983. So 1983 के बाद कोई भी Indian Prime Minister की visit नहीं हुई है to Greece. But despite that, he said, he assured that the warmth and जो importance है, that is not diminished. But there are, we see the absence of high-level contact meetings in order to ensure close strategic ties. So now we are working on these lines. So we have agreed to establish a strategic partnership, and we have also announced plans for a dialogue mechanism between the national security advisors and also cooperating to complete the negotiations for the Indian-European Free Trade negotiation on the connectivity partnership. So that is there. And historically, we talk about 2 countries that are forged by the Alexander's invasion, which happened in 326 BC. Exchanges now have been mainly predicated on, again, tourism, trade, migration of labor without a more comprehensive bilateral strategy. So कुछ focus areas हैं, again, जहाँ पे हम cooperation देख सकते हैं, tourism, trade, migration of labor. And then again, we'll also work upon the common cause of to restore some of the historical property. So that is another thing. And again, Greece, it is also seen as an economic gateway to the European Union. So Greece में देखा है हमने कि it has come out of the economic trouble spot, and once over indebted to the Chinese investment, it seeks to diversify its options. So again, one of the sustainable options for it can be India. And then apart from this, when it started to look for other options, other countries, so it strengthened its ties with Israel and Cyprus as well. And again, India might find some common ground here as well, given Delhi-Ankara tensions over the Turkey's role in the OIC and over Kashmir. So यहाँ पे again we can find some common ground to cooperate.
So news media versus the open artificial intelligence chat GPT. So why have major news agencies and newspapers like the New York Times, Reuters, they have blocked the GPT bot? What are the crawlers and how do they help the large language models? Why is there no furor over the search engines scrapping data from the news websites? So let's understand this. It's an important topic from technology. So what does OpenAI do? So an example of that is ChatGPT, which is an AI conversational chatbot. So basically you can ask questions on just about anything. आप किसी भी चीज से regarding उस पे कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी पे पूछ सकते हो, एंड इट विल रिस्पॉन्ड प्रिटी एक्यूरेटली विद द आंसर्स विद स्टोरीज एंड एसेज. बट इट कैन आल्सो हेल्प प्रोग्रामर्स राइट सॉफ्टवेयर कोड आल्सो. So जो hype है around the chat GPT, specifically breathtaking advancements in the field of AI required to create it, that has propelled OpenAI into becoming a $30 billion company. So now when we talk about the face-off between the news outlets and OpenAI, so उसको समझते हैं. कुछ software products are like ChatGPT, they are based on what the AI researchers call the large language models. So ChatGPT is also based on the large language models. So जो models होते हैं, they require enormous amounts of information to train their systems. Because जब आप कुछ भी पूछ सकते हो ChatGPT पे and it can answer you immediately within seconds, तो जो जिस लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है टू द सिस्टम्स उसको हम बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल्स वो होते हैं. एंड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ उनको ट्रेन किया जाता है. सो इफ चैटबॉट्स या डिजिटल असिस्टेंट्स दे नीड टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जो ह्यूमंस पूछ रहे हैं उनसे, दे नीड टू स्टडी द ह्यूमन लैंग्वेज पैटर्न्स ऑल्सो. सो जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं that work on these large language models, चाहे Google, Meta या OpenAI की बात करो, they're secretive about कि what kind of training data to use. So यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाती है. So it's clear कि जो ऑनलाइन कंटेंट है हमें इंटरनेट पे मिलता है, चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, न्यूज आर्टिकल्स, विकिपीडिया, ई बुक्स, दे फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डेटा सेट जिसको यूज किया जाता है टू ट्रेन द चैट जीपीटी एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स. सो जो डेटा है इट इज पुट टुगेदर बाय स्क्रैपिंग इट ऑफ द इंटरनेट. एंड टेक कंपनीज वो यूज करती हैं सॉफ्टवेयर जिनको हम बोलते हैं क्रॉलर्स टू स्कैन द वेब पेजेस एंड होवर अप द कंटेंट एंड पुट इट टुगेदर इन अ डेटा सेट जिसको यूज किया जाएगा टू ट्रेन देयर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. सो दिस इज व्हाट द न्यूज आउटलेट्स दे टुक अ स्टैंड अगेंस्ट, and they blocked a web crawler which is known as GPT bot through which OpenAI used to scrap the data. So they told OpenAI कि जो company it can no longer use their published material and their journalism to train their chatbots. तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके बिजनेस को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है. सो OpenAI को बोला गया है कि जो इन टेक कंपनीज का डेटा है आप उसको यूज नहीं करोगे जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है टू ट्रेन दी चैट जीपीटी बॉट. So media companies की upset है. So search engines like Google or Bing, they also use these web crawlers to index the websites and present relevant results when users they search for the topic. So only difference is कि जो search engines है they represent mutually beneficial relationship. मतलब अगर आप Google का example लोगे तो it takes a snippet of a news article, a headline, a blurb, and it reproduces them to make its search results useful. So Google profits off of that content. It's also directly a significant amount of user traffic to the websites as well. तो चैट जीपीटी के थ्रू बेसिकली क्या हो रहा है कि आप न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर नहीं जाओगे, चैट जीपीटी ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा एट वन प्लेस. सो बेसिकली आपको सोर्स नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, बट जो आप पूछोगे वो आपको प्रेजेंट कर दी जाएगी. सो दैट इज अगेन द कंसर्न ऑफ द मीडिया कंपनीज ऑल्सो. अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो यू गेट डिफरेंट वेबसाइट्स के आपको इन अ वे लिंक्स मिल जाते हैं जिस चीज के बारे में आपने सर्च किया. तो यू विल बी ऑल्सो यू नो आप क्लिक करते हो जो आपको एप्रोप्रिएट लगता है तो यू गो ऑन दैट वेबसाइट. बट दिस इज नॉट द केस इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी. सो ओपन एआई के केस में बेसिकली कोई बेनिफिट मॉनिटरी या अदरवाइज नहीं होता है न्यूज कंपनीज के लिए. सो सिंपली कलेक्ट करता है पब्लिकली जो भी डेटा अवेलेबल है एंड यूजेस इट फॉर द कंपनीज ओन पर्पसेस. So that is the main concern here. सो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सस्पेंड कर दिया इंडिया का जो WFI है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया.
So consequences क्या होंगे अब इसके? Did the protest by the champion wrestlers against the former wrestling federation of India's chief, क्या उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें ये सस्पेंशन देखने को मिला है कि नहीं? So what is the impact now as per this United World Wrestling's letter to the Indian Olympic Association appointed ad hoc committee, which is ruling the WFI in the absence of an elected body, wrestlers and their supported personnel, is seeing they remain authorized to participate in all these sanctioned events. However, they shall do so under the UWW flag and not under the WFI. So इसका मतलब है कि जो Indian wrestlers हैं, they cannot compete under the national flag in the United World Wrestling Championships and events. And national anthem भी नहीं play किया जाएगा if an Indian wrestler wins a gold medal. So this is something really of high concern. Ki despite winning a gold medal, Indian national anthem, it will not be played. So what caused the delay? So as some prominent wrestlers we saw, ki wrestlers they were on protest. We know ki reason क्या था. So they brought the allegations of sexual harassment and intimidation against the president of WFI, and उसके बाद हमें देखने को मिला कि after the inquiry जो की गई, even though oversight committee जो थी, the report was not made public, but WFI on April 16 announced कि जो उसके elections हैं, which were due in Feb, they would be held on May 7. So wrestlers then they returned to the protest sites again. They demanded the arrest of the former WFI president also. So they also demanded that Brij Bhushan's family members that they should be stopped from contesting the elections as well. And obviously जो former president था वो तो eligible नहीं होना चाहिए to contest the next election. So ministry halted the polls on April 24 and asked the Indian Olympic Association to form an ad hoc committee बनाई गई to complete election process within 45 days. So elections किए गए and Indian Olympic Association appointed Justice M.M. Kumar as the returning officer for the WFI elections on 12th of June, after which polls they were scheduled for 6th of July. And apart from this, disgruntled state association seeking the voting rights, that also caused further delay in this election process. And जो UWW का disciplinary chamber had found sufficient grounds to provisionally suspend the WFI due to prevailing situation for at least 6 months. So जो current situation है वही reason दिया गया है, उसको suspend किया गया है, absence of an elected president, board भी नहीं है, it did not comply with the UWW regulations and जो conditions हैं for the membership. So because of that, WFA को suspend कर दिया गया है, and chamber it also considered protection of the athletes after the allegations against the former WFI president also. And it is important to restore the functioning of the federation as another ground to suspend the national body. So अब आने वाले टाइम में बात करते हैं, तो आने वाले टाइम के लिए even as Brij Bhushan is a 6-time influential MP also from UP and BJP. So different factions of WFI need to realize the immense loss जो again sport of wrestling it has suffered because of this ongoing issue. So only way to bail the country out of this international ignominy and give the athletes their right to compete under the tricolor is to conduct WFI elections in a free and fair manner. क्योंकि अगर इलेक्शंस के बाद भी चीजें सॉल्व आउट नहीं होंगी या फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस नहीं किए जाएंगे, so situation will continue. And again, global level pay, talk about Indians, and despite winning a gold medal, they're cannot celebrate it. This is one of the biggest things कि national anthem नहीं play किया जाएगा. So उनकी right है, right to compete, and इस चीज को ध्यान में रखते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किए जाने चाहिए. अगेन चाइना ने एक न्यू मैप रिलीज किया जिसमें कुछ नए टेरिटोरियल क्लेम्स समझ में आ रहे हैं. सो 2023 एडिशन जो है स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना शोज के कुछ एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड एक्साइचन वो चाइना अपनी बॉर्डर एरिया के अंदर शो कर रहा है थ्रू दिस न्यू मैप. सो इट्स सीन एज अ रिस्पॉन्स टू इंडियाज होल्डिंग इवेंट्स इन द लीड अप टू द G20 summit in the state of Jammu and Kashmir and then लद्दाख वाले एरिया में अरुणाचल प्रदेश में.
तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं न्यूज में चलता ही रहता है. इंडियन ओशन region coinciding with a paneled Indian long-range missile launch, but the launch was then deferred and vessel re-entered the Indian Ocean region in December when the missile test was rescheduled. So Indian Ocean region, इंडिया को सबकॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हमारी जोग्राफिकल लोकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा और इंटरनेशनल रिलेशंस से थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए. इंडिया श्रीलंका रिलेशंस इंपॉर्टेंट है. अभी ऑफ डेट जब हम श्रीलंकन क्राइसिस की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, इंडिया के क्या डेवलपमेंट मेजर्स रहे श्रीलंका में, हमने कैसे सपोर्ट किया, तो आपको वो पता होना इम्पोर्टेंट है. सो कास्ट स्पेस सर्वे जो किया जा रहा है बिहार के अंदर, सेंटर ने जो यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ओनली इट इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द सेंसस. सो यूनियन गवर्नमेंट सेड कि ओनली जो यूनियन है, only that is entitled to conduct a census. In its reply to the Supreme Court in the Bihar government's caste-based survey. तो अभी जो सर्वे किया जा रहा है that is by the Bihar government. So census जो it is a statutory process जो govern किया जाता है under the Census Act of 1948 and जो subject of census है वो union list के अंदर fall करते हैं under entry 69 under the 7th schedule of the constitution. तो since union list के अंडर ये fall करता है तो it becomes very clear कि caste based survey, मतलब यहाँ पे कास्ट बेस्ड सर्वे नहीं, खाली सेंसस की बात की जा रही है. तो सेंसस इट कैन बी कैरिड आउट बाय ओनली दी सेंटर. सो सेंटर ने जो फाइल किया अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सेड कि इट्स penultimate paragraph that no other body is entitled to conduct the exercise of either census or any action which is like a census. So the paragraph was later purged in a revised affidavit. So revision is significant as Bihar government has argued that its action is not strictly a census but only a survey done for the welfare of its people. तो census और survey में अब क्या difference होता है ये आपको with clarity पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम सेंसस नहीं कर रहे हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं जो लोगों के लिए ही फायदेमंद है. अगेन चंद्रयान 2 के जो फेलियर्स हमें देखने को मिले, लैंडर जो क्रैश हुआ, पैनल ने सजेस्ट किया इम्प्रूवमेंट्स टू द सॉफ्टवेयर, गाइडेंस कंट्रोल सिस्टम, प्रोपल्शन मैकेनिज्म एंड पावर डिसेंट स्कीम एंड विक्रम लैंडर. सो इन एरियाज में हमने इम्प्रूवमेंट्स करी है. यहाँ पे हमें जो चैलेंजेस देखने को मिले ड्यूरिंग चंद्रयान 3, उसकी वजह से ही चंद्रयान 3 हैव बीन सक्सेसफुल. सो एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम उसको वेरीफाई किया गया, वैलिडेट एंड स्ट्रेंथन किया गया, बिकॉज once the power descent starts, everything is autonomous and has to work with precision. Libya and Israel, again, tensions are growing. So Libyan Prime Minister sacks the minister as the rover Israel meet grows. So meeting is contentious because Libya, it is not formally recognize Israel. तो लिबिया फॉर्मली इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट मीटिंग होने वाली है एंड देयर इज वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट आल्सो अक्रॉस द लिबियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज. तो लिबिया इज सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, बट अभी ऑफ लेट लिबिया और इसराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में मीटिंग होने वाली है. सो दैट्स व्हाई बेसिकली थिंग्स आर टर्निंग बैड. So population growth is not a panacea. India's growing population, it can help boost its labor force, so एक advantage, but it is not enough to make the economy stronger. So again, labor force grow होगा, but हम यहाँ बात करते हैं human resource की. तो with growing population, we need to focus upon imparting
skill training to the people, to the labor force, in order to basically strengthen, make our economy much more stronger. So ratings body Moody's की बात करें तो उनका कहना ये है कि strong education and quality infrastructure, they are the key to reaping the benefits of the larger population. So apart from skills, strong education, so strong education में आप बात कर सकते हो जो हमारी national education policy आई है, हमारा जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको रिवाइज किया जा रहा है, एंड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ दैट आल्सो वी आर सीइंग the capital expenditure being done by the government. So uncertain dividend की बात करें, India's growing population expected to aid the economic growth, but quality of education could be a spoiler. तो यहाँ पे again quality of education पे हमें और ज्यादा improvement करने की जरूरत है. मूडीज का कहना ये है कि जो इंडिया की करंट एजुकेशन आउटकम लेवल्स हैं, दे आर कंपेरेबल विद दैट ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. तो यहाँ से यू कैन गेट एन आइडिया कि व्हाट इज द सिचुएशन. हम बात करते हैं एजुकेशनल आउटकम्स की. स्पेसिफिकली कोविड-19 की वजह से भी कहीं ना कहीं जो आउटकम्स है वो हैम्पर हुए हैं. तो वी नीड टू वर्क अ लॉट if you want to take the advantage of growing population. So there's a considerable gap जो exist करता है in the quality of education between India compared with its peers like China. So again we can take inspiration from China, you can learn some lessons from China. China ने कैसे work किया है इस area में. And gender disparity educational achievements is the most pronounced in India and Bangladesh. So it is believed कि हमारा जो Q1 का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो सकता है to 1% of the GDP, और terms of value $10 billion तक can fall. So falling trade deficit, इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है that is likely to narrow to about $10 billion in the first quarter. And अगर हम ओवरऑल डेफिसिट की बात करें पहले वाले पीरियड में तो it was recorded at 2% of the GDP. बट एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड क्वार्टर में करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है एज इट सीज कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं बिलो $100 billion आफ्टर गैप ऑफ 8 क्वार्टर्स. तो हमारे एक्सपोर्ट्स अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो अगेन करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा अगर इंपोर्ट्स में कोई चेंज नहीं है तो. सो कंस्ट्रक्शन डेबरिस को कैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं उसके लिए हाउ वी आर वर्किंग अपॉन दैट इज इम्पोर्टेंट. सो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ द waste disposal. Coming to mid newspaper, so global standard for artificial intelligence. Artificial intelligence की बात करते हो तो ethical usage हम इसको completely avoid भी नहीं कर सकते हैं and इसके ऊपर completely dependent भी नहीं हो सकते. तो कैसे इसको balance and regulate करेंगे तो इसके around एक global standard creation की बात की जा रही है. So let's see this in detail. So why there's a buzz around regulating artificial intelligence? Again जो हमने बात करी ethical usage and स्पेसिफिकली चैट जीपीटी के बाद हमें ये ज्यादा देखने को मिल रहा है रेगुलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर रिलायंस अपॉन दिस टेक्नोलॉजी कैन रियली हैम्पर थिंग्स. सो ऑब्वियसली ये ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज तक तो नहीं पहुंच सकता है एंड इट कैन आल्सो क्रिएट डीप फेक्स that are hard to distinguish from the original audio and video. So global tech leaders जैसे कि एक हमें ऐसा global standard framework चाहिए to regulate this technology. And B20 summit हुआ है, it said कि regulating AI it would be crucial to enable global real-time payments, लोगों का ट्रस्ट मेंटेन करना इन द वर्क प्लेसेस एंड साइबर अटैक्स प्रिवेंट करना, इंपॉर्टेंटली इंश्योर कि जो इंटरनेट है डज नॉट बिकम फ्रैगमेंटेड बाय रेगुलेशंस डिफरेंट कंट्रीज. सो दैट्स व्हाई कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड होना इंपॉर्टेंट है. सो बिजनेस लीडर्स का कहना क्या है? सो हेयर वी सी कि they highlighted the role of AI in finance, cloud services, healthcare, infrastructure. तो अब जब applications की बात कर रहे हो तो diverse applications हैं, बट एट द सेम टाइम अगेन एप्लीकेशंस हैं, इतने ज्यादा फायदे भी हैं तो नेगेटिव्स भी है, तो उसको बैलेंस करके वी कांट इग्नोर द नेगेटिव्स ऑफ इट.
So is there a precedent for such global regulation or not? तो क्या हमने ऐसा पहले कभी किया है जब हम global regulation की बात करते हैं? So we can take the case of civil aviation. So every nation, they have their own commercial aviation regulator to lay down what is permissible. तो domestically and nationally हर कंट्री के पास एक रेगुलेटर है जब हम सिविल एविएशन इंडस्ट्री की बात करते हैं. सो एक कॉमन फ्रेमवर्क है बिटवीन ऑल द नेशंस. दे एग्री विद इन द ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल फ्लाइट्स. आप कैसे करोगे? सो वी हैव द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. तो वी डेफिनेटली वी कैन लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड क्रिएशन फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड इट्स यूजेज की बात करते हैं. तो So क्या countries and technology collaborate करेंगी? So despite geopolitical situation and corporate rivalry, global framework possible है. So 2020 में इंडिया ने help किया था in terms of global partnership on AI. 29 nation body है. And the goal is to collaborate on establishing a common global framework for responsible and ethical AI. So these are the keywords. सो कॉमन ओवरसाइट एंड गवर्नेंस रूल्स के ऊपर हमें काम करने की जरूरत है. सो इंडियन लॉज की बात करें एज फार एज रेगुलेशन ऑफ एआई इज कंसर्न. सो हेयर वी सी कि जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है फॉर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने बोला कि रेगुलेशन टू चेक द रिस्क फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी वो कंसिडर किया जा रहा है फॉर द अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट. तो कहीं ना कहीं एक सेपरेट एक्ट नहीं आएगा, इसी के अंडर इसको इंक्लूड किया जा सकता है. रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क पे और काम किया जा रहा है. एंड न्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है इट इंट्रोड्यूस्ड द चेक्स ऑन द डेटा स्क्रैपिंग फॉर एआई. तो डेटा स्क्रैपिंग की अभी हमने बात करी थी जो टेक कंपनीज की मेन कंसर्न है, बट एज ऑफ नाउ कोई ऐसा डायरेक्ट रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So quote of the day is coming from Mukesh Ambani. So he says that I shall continue to perform my duties and responsibilities as a chairman and managing director for 5 more years. I shall groom and empower all the next gen leaders at Reliance and prepare them for the challenges and opportunities of the future. So inflation must slide visibly towards 4%. So यहाँ पे it should be brought within the central banks. तो हमारा tolerance level है 2 to 6% on sustainable basis, and जो उसकी trajectory towards 4% must be visible before the war on inflation can be slackened. Coming from the Monetary Policy Committee's members, so जो अभी food inflation देखी जा रही है उसकी वजह से overall inflation, headline inflation has been recorded at 7.44%. So tolerance band at 2 to 6%. So it is obviously across the 6% level. So जो projected inflation है अगर वो sustained basis पे रहेगी below 5%, तो उसी के बाद जो real repo rate है that can be relaxed. And again then rural demand वो भी एक issue है. जो वो monsoon है, it was much of growth shock as it was an inflation shock as well. So यहाँ से चीज थोड़ी खराब हुई and inflation is expected to resume its downward trajectory from the next quarter. So again थोड़ा positive outlook हमें आगे वाले टाइम के लिए दिखाई दे रहा है. Taking a financial express. So let's see the new important topics. So Adani fell short in the disclosures according to the SEBI probe. And SEBI, according to this probe, it also flags the breaches in the offshore fund holdings. And today is the hearing. So SEBI ki again, what are the findings? So his holdings of the offshore funds hai. In some of the Adani firms, it breaches 10% limit, breaches the technical nature, likely to attract monetary penalty लग सकती है इसकी वजह से, and जो violations and disclosing certain related party transactions,
सेबी ने कुछ अराउंड 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन किया है। तो ओवरऑल अगेन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, व्हाट इज गोइंग टू बी द जजमेंट, सो दैट विल बी समथिंग व्हिच विल बी मॉनिटरिंग। तो गति शक्ति की बात करें तो 100 प्रोजेक्ट्स ऑफ नियरली 6 ट्रिलियन रुपीज दे गेट ग्रीन सिग्नल अंडर गति शक्ति। So road transportation, railways, housing, NICDC, petroleum, shipping, renewable energy, you can see these are several projects which are under the works. So around total 100 projects are there which have got the green signal and the approval. So multimodality, synchronization of the efforts and comprehensive development in and around the project location is important. So the network planning group, it meets every fortnight and that's how it is working. Now again आप लोगों को अब सोचना है कि इसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या और बाकी एरियाज में, सोशल डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, एंड एथिकली आप सोच सकते हो डायमेंशन। सो क्रॉप प्रोडक्शन को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वन थिंग इज कि हम प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे तब हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू डेटा ड्रिवन, स्मार्ट एंड अडेप्टिव टू क्लाइमेट चेंज, दैट इज इंटीग्रल टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फार्म सेक्टर। सो तीन कीवर्ड्स, डेटा ड्रिवन एग्रीकल्चर, स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड अडेप्टिव टू द क्लाइमेट चेंज, तब चीजें और सस्टेन तरीके से आगे हम कर सकते हैं। So services sector drives the infrastructure projects growth. अब services sector and infrastructure projects यहाँ पे हमें linkage समझना है। तो fall in the manufacturing projects देखने को मिल रहा है, rise in the services projects, drop in manufacturing projects, slow down in the services projects. So you can see projects announced and projects completed के terms में मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कंप्लीशन के टर्म्स में फॉल देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन इन द सर्विसेज प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन। सो सी की while the value जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए हैं इन द 3 months to June, that has grown at 8% year-on-year basis पे, and the services sector drove the growth with the projects amounting to rupees 4.5 trillion. So this is comparatively a rise of 11 times compared to the year ago period. And services sector में जो growth देखने को मिल रही है, it is further accentuated by the fact that as many as 11 of the 14 high frequency indicators जो है pertaining to the sector, it recorded a year-on-year growth in first quarter also. So services sector में projects में हमें growth देखने को मिल रही है, new projects announce किए गए हैं manufacturing में, that has declined, and construction activities are also boosted. The total of the investment projects completed, which touched a record high of 7.8 trillion rupees. So real estate and construction sectors, they have announced 83% of the total projects to be completed. तो यहाँ पे भी हमें अच्छी growth देखने को मिल रही है। सो ISC चीफ का कहना ये है कि जो हमारे ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस हैं, इट में एक्सीड 500 गीगावाट। सो देयर इज नो डाउट कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज टू द सर्कमस्टेंसेस, manage the change, and also at the same time make sure we do not cross the Lakshman Rekha of irreversible change. So तीनों factors, we need to keep all of them in mind. So India is poised not only to achieve the ambitious target of 500 gigawatts of renewable energy capacity by 2030, but also surpass it, driven by anticipated decline in the battery prices. And International Solar Alliance Director General has put forward this thing. So he forecast, the forecast they are indicating कि this thing possible कि future में it may come around अगर battery prices fall है, तो major focus इस चीज पे है कि यहाँ से हमें जो advantage मिलेगा, मतलब कि around 2024-25 this can happen. So solar energy plus batteries, it can become the energy source of choice because they are going to be the cheapest
expected sources. So battery prices अगर decline हो जाएंगे तो again उसकी demand, उसके ऊपर reliability and usage would increase, and then solar energy तो है ही. Taking up Indian Express newspapers, so see the important topics from here. So javelin, you can see gold standard. Neeraj Chopra, he wins gold medal at the World Championship. Citing inflation and WTO subsidy limit, Niti and Commerce Ministry red flag the MSP hike. तो MSP हाइक की वजह से अगेन इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो सकती है, एक ही कंसर्न है. एंड WTO जो सब्सिडी लिमिट है तो ये भी रेड फ्लैग की गई है. सो नीति आयोग एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री दे हैव बेसिकली रेड फ्लैग द MSP हाइक इन दिस केस. सो MSP हाइक अगेन जो इशू है WTO पे रिगार्डिंग दिस सब्सिडी जो प्रोवाइड की जाती है, इन अ वे सब्सिडी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है टू द फार्मर्स. तो कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि अगेन जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा. सो रेम्यूनरेटिव प्राइस फॉर द फार्मर्स इसेंशियल है, दिस इज व्हाट द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इज सेइंग. बट इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली वी नीड टू टेक दैट थिंग ऑल्सो इनटू अकाउंट. एंड जो WTO में भी इशू है वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो यू कैन सी कि डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो ग्लोबली कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और बाकी एरियाज में भी उनका इम्पैक्ट होता है. So again, you cannot see things in isolation. So we are seeing कि कोटा में जो सुसाइड के केसेस हैं they touch 8-year high. So again, क्या measures लिए जाने चाहिए in order to ensure the safety and strong mental health of the students? So springs on ceiling fans, anti-suicide nets in the hostels, and now an order temporarily barring the institutions from holding the test. Despite a string of measures, the administration, some of the biggest coaching institutes in Kota, they have failed to contain a spate of suicides by the students. So even जो टेस्ट भी लिए जाते हैं वो भी कराना बंद कर दिया गया है. And springs लगाए गए हैं सीलिंग फैन में तो so that again that is not misused, and suicide nets install किए गए hostels में. But again उसके बाद भी still the cases recorded at 8-year high. So और क्या requirements हैं, कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, या again जो mental health की हम बात करते हैं उसको हम how we can keep it in a healthy way, उसको हम कैसे nourish कर सकते हैं, that becomes important, and that too under all this pressure. ब्रिक्स के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, ये हम आज नहीं लेंगे. India should play a role in shaping the global AI regulatory order while nurturing the domestic ecosystem to build the AI expertise.
So domestically again हमने बात करी कि as such ऐसा कोई law नहीं है to regulate the usage of AI, but जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है एक्ट आने वाला है उसमें इट वुड बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स. एंड अगेन ग्लोबल स्टैंडर्ड की जो हम बात कर रहे थे, कॉमन ग्लोबल स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई यूसेज. तो उसमें इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले डेफिनेटली कर सकता है. एंड हिस्टोरिकली हमने देखा कि क्या ऐसा कोई हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है हमारा जो हमें हेल्प कर सकता है. तो इन दैट केस वी अंडरस्टूड दी case of the civil aviation industry. सो AI टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जब एप्लीकेशंस, तो अगेन डाइवर्स एप्लीकेशंस, आप कोई भी सेक्टर सोच सकते हो वहां पे आप AI टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो. सो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ वी नीड टू अगेन बैलेंस द थिंग्स. एंड creation of an international body for the development, standardization, and use of this technology is important. So strong technology ecosystem that exists in India, the country is well placed to play a crucial role in shaping this global AI regulatory framework. So अब आप strong technology ecosystem जो बोल रहे हैं इंडिया में exist करते हैं, तो आप इसको कैसे substantiate करोगे? वहाँ पे आप जो हमारा डिजिटल इकोनॉमी का एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात कर सकते हो. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हमारे पास, हाउ इट इज एक्टिंग, जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है, इवन आईटी सेक्टर, इवन ऑब्वियसली इट हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग अवर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो आप उस सब के बारे में बात कर सकते हो. So late summer COVID wave in USA brings warning of more to come. So again, आगे जाके चीजें और ज्यादा खराब हो सकती है. ये again we can't take things for granted. So for Americans who moved beyond COVID, the current wave, it could be a rude reminder of the things which happened back again. So hospitalizations right now, they are low, but they are on rise in recent weeks. And again, we need to be vigilant. We need to maintain and monitor things properly, learning from the experiences in the past. So on moon, very hot to very cold, separated by just a few millimeters, we see sharp variations have been observed. So as per the depth and the temperature variations, so you can see कि जब हम depth की बात करते हैं -80 mm पे, you can see temperature is somewhere around -10 degrees Celsius. And जब आप zero level पे surface level of moon की बात करोगे तो temperature is somewhere at 40 to 50 सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड किया गया है. तो मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं इन दी टेम्परेचर. एंड फर्स्ट सेट ऑफ डेटा जो हमें मिला है बाय द इसरो, इट शोड की वेरी शार्प डिफरेंस इन टेम्परेचर जस्ट अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ मून. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव गॉट टू नो. ग्राफिकल प्लॉट के थ्रू आप देख सकते हो कि कितना शार्प स्लोप है इस ग्राफ की. So measurements suggested कि जो topsoil है lunar surface का, it did not conduct heat very well, and that insulated the subsurface from the heat. So जो topsoil है वो basically does not let go that heat inside. So इसलिए जो basically depth पे temperature है that is very low, and topsoil का temperature is very high. We call it as the thermal profile of the moon. And it is the first direct measurement of the temperatures of the topsoil and the subsoil near the south pole of the moon that has been conducted successfully by India.
सो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके साइंटिस्ट ने 3 डायमेंशनल मॉडल्स बनाए हैं ऑफ थर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द मून, एंड it is known that a thin upper layer of the lunar surface, few centimeters thick, shows very low thermal conductivity. So thermal conductivity exist नहीं करती, उसकी वजह से we are seeing sharp temperature variations. Feet on the moon, eyes on the sun. Sun से regarding से आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने वाले हैं. Can see all important details. This is the L1 point जहाँ पे will be placing the satellite, and यहाँ से we can continuously monitor the sun and the activities जो हमें assess करनी है. So we're going to, again, objective is to unlock the mysteries around the sun. So distance जो है L1 और Earth SOI exit के बीच में, sorry, Earth और L1 point के बीच में, the distance is 1.5 million kilometers. And that's how it would be, you can see firstly that's how it would be orbiting around the Earth. And then this is the cruise phase. इसको यहाँ पे exit किया जाएगा, launch किया जाएगा, and external velocity में, and that's how it would be then launched into this halo orbit insertion in L1. So जो spacecraft है इसको launch किया जाएगा on PSLV XL rocket. It will carry even 7 payloads to observe photosphere, chromosphere, and outermost layer of the sun, जिसको हम corona बोलते हैं, using electromagnetic and particle and magnetic field detectors. तो यहाँ पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना क्या बेसिकली वी कैन से पैराडॉक्स क्या एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो इन लेयर्स पे हमें रिकॉर्ड किया गया या सो फार वी नो. सो L1 पॉइंट हमने देख लिया है. साइंस ऑब्जेक्टिव्स, अगेन वी हैव टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज अराउंड द सन. तो लॉन्ग स्टैंडिंग मिस्ट्री यही है कि वाई नॉट सो ब्राइट कोरोना ऑफ द सन, मतलब जो आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर है सन का वो मिलियन डिग्री हॉटर है जब हम कंपेयर करते हैं टू द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन. सो ह्यूज वेरिएशन एग्जिस्ट करता है. तो इसका ऑपोजिट होना चाहिए, सरफेस ऑफ द सन ज्यादा हॉट होना चाहिए कंपेयर टू द आउटर एटमॉस्फेयर, बट इसका ऑपोजिट एग्जिस्ट करता है. तो एक इसके बारे में वी नीड टू do more research. So this is going to be one of the objectives. And then solar winds regarding also we'll be studying more. So solar low energy X-ray spectrometer would be used. High energy L1 orbiting X-ray spectrometer. They've been developed by the UR Rao Satellite Center. And so sun जो है nearest star है to us, and therefore it can be studied in much greater detail than other stars. So sun को study करना, it can help us understand more about the stars, and sun supports all life on the earth, so it is other various explosive phenomena as well. So it can damage our satellites also and communication systems at the same time. So sun को study करने से we might get help in providing early warnings for such events. And जो बाकी thermal and magnetic phenomena है on the sun, they are of extreme nature. So sun provides good natural laboratory to understand them, which cannot be directly studied in the lab. So that's why studying sun is important, and it's important to study the sun from space because जो earth का atmosphere है and magnetic field है वो कहीं ना कहीं protective shield की तरह act करती है that black out the harmful radiations from the sun, which are the ultraviolet radiations. So studying the sun from the earth, it cannot provide us a complete picture. इसलिए studying the sun from the space would be much more, we can say, to the point and keep things real. So 3 spots on the moon: Shiv Shakti, Tiranga, and Jwahar Sthal. So how are sites on the moon? They are named. So you can see Sea of Serenity, Copernicus crater on the lunar surface, Sea of Tranquility. So Shiv Shakti point is where recently Chandrayaan-3 has landed. Tiranga point जहाँ पे Chandrayaan-2 land किया था. And you can just go through it. इनके पीछे again, what is the idea behind naming them this by these names?
तो फॉलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट जो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. And apart from this, all right, so these are all the topics for the day, and do subscribe to the channel. Stay tuned for everyday sessions and also like the video. Thank you so much.